operations over the independent variable. And in yesterday's class, we discussed about the uh, uh, operations over the independent variable for CT signal. Today, we are going to discuss the same operations for the DT signal, that is a discrete time signal. So we have two different type of signals. One is known as CT, another is known as DT. CT stand for continuous time, and DT stand for discrete time signals. CT signals are those signals which exist for all the values of the t, and the DT signals are those signals which exist only for the discrete instance, where the discrete instance can take only integer values and non-integer values are not permissible. So that is DT signal. So yesterday we did a discussion on uh, uh, signal operations over the independent variable, that is time, for CT signal. Today we are going to discuss the same operation, that is a signal operation over the independent variable, but for DT signal. So we start with this first case study, that is the which comes under the time shifting operation. So DT signal, suppose a DT signal which is a finite data sequence signal is given to us. The discrete time signal can be further of two types. One is finite, another is infinite. Finite data sequence or infinite data sequence. So the difference between finite data sequence and infinite data sequence is that, as the name specify, in case of infinite data sequence, the sequence will consist of infinite number of elements, maybe starting from -70 and ending at plus infinity. Whereas if you have a finite data sequence, then the number of elements in the given discrete time signal will be finite one. For example, we have taken a case study where the discrete time signal, that is x of n, can take only these values, and for example, say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 elements in the given data sequence, and hence we can call this data sequence as a finite data sequence. So this is a finite data sequence. इसकी जगह अगर कुछ signal होता कि xn is equal to say n square plus 1. So n square plus 1 means n can take any value. N can be equal to plus 1, it can be equal to plus 100, and it can be equal to minus 500 also. So n can take any value if there is no boundation given in the numerical statement. So in that case, the n n can take any value from -1 to plus infinity, and the data sequence can become an infinite data sequence. But for the given case, we have only a finite number of elements, that is 8 elements in the given data sequence, that is x of n, and hence this is known as a finite data sequence. So generally we specify finite data sequence with this type of notations, where we use these brackets, and under these brackets we have some finite number of elements. Now we have to identify the origin position. Generally, whenever a data sequence is given to you, an arrow is marked uh, at a particular element. For example, in this data sequence, under 4, right, under this particular element, an arrow has been marked whose value at this particular position is equal to 4. So if you have a data sequence, right, if you have a data sequence and an arrow is marked below a particular element, right, then that tell us about the origin position of the data sequence. That is, this is the value of x0, that is when n is equal to 0, right? So this is the 0th element in the given data sequence. On the right hand side, we have the positive values of the n, and on the left hand side of this particular arrow position, we have the negative values of the n, right? So here the value of n will be equal to 1, n equal to 2, n is equal to 3. X1 has a value equal to 2, x2 has a value equal to 3, x4 has a value or magnitude is equal to 2. Similarly, x minus 1 has a magnitude is equal to -1, x2 has an amplitude value is equal to 3, x3 has an amplitude value is equal to 2, x minus 4 has a value is equal to +1. So these values are for negative values of the n, and these amplitude values are for the positive values of the n. So this is how we write the discrete time data sequence or discrete time finite data sequence.
Right. So if you have any doubt regarding this particular point कि कैसे हम डाटा सीक्वेंस लिखते हैं और एरो कैसे स्पेसिफाई करता है जीरो पोजीशन और एरो के राइट हैंड साइड पे हम कैसे जीरो पॉजिटिव एलिमेंट्स लेते हैं फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द एन एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो वी हैव द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द एन. तो अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो. Yes, any question? एरो वाला तो समझ नहीं. Yes. Yes, हाँ जी. Yes, any question? किसी ने पूछा था कुछ? सर ये समझ में नहीं आया. समझ क्या चीज समझ में नहीं आई? ये आप एरो मतलब बता रहे थे ना जीरो के साइड समझ में नहीं आया सर. डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का पता लग गया. डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है? यस सर. राहुल. Okay. So we know that we have if we have a discrete time signal, then that discrete time signal will be defined only for finite instance, right? And generally the value of n, that is the independent variable which is plotted along the x-axis, that independent variable can take only integer values and non-integer values are not permissible. So if any finite data sequence is given to you, then you have to identify where the origin position is lying. राइट. ओरिजिन पोजीशन कहाँ पे लाई करती है? जैसे हमने कल जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस किया था उसमें आपको जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रखा हुआ था उसमें इंटरवल की वैल्यूज दे रखी हुई थी कि t जो है वो 0 से लेके 3 के बीच में उसका x ऑफ t का वैल्यू ये रहेगा, 0 से लेके 2 के बीच में जो है वो ये वैल्यू रहेगा. ठीक है. इस तरह से आपको इंटरवल की फॉर्म में बता रखा था. तो आप प्लॉट करते थे और आपको पता था कि xt जब xt x ओरिजिन पोजीशन कहाँ लाई करती है. अब अगर एक डाटा सीक्वेंस आपको दे रखी है तो उससे आपको नहीं पता लग पाएगा कि ओरिजिन पोजीशन कहाँ पे लाई कर रही है. फॉर एग्जांपल से अगर हम एरो मार्क नहीं करते इस डाटा सीक्वेंस में, कहीं पर भी एरो किसी भी एलिमेंट के बिलो एरो मार्क नहीं किया हुआ, तो आपको कैसे पता लगेगा ओरिजिन कहाँ पे लाई कर रहा है? क्योंकि ये जो सिग्नल है जैसे आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे, जैसे यहाँ पे हमने प्लॉट कर रखा है एक्स ऑफ एन वर्सेज एन, राइट. तो आपको पता तो है कि ये एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स का ये मैग्नीट्यूड्स हैं और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल टू 8. ठीक है. आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन डाटा सीक्वेंस इज इक्वल टू 8 एंड दीज आर द मैग्नीट्यूड्स और एम्पलीट्यूड ऑफ दीज रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स. बट ओरिजिन कहाँ पे लाई करता है? क्योंकि आपका जो सीक्वेंस है वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता था. यहाँ से अगर स्टार्ट होता तो आप इसको जीरो पोजीशन मान लेते और सारे एलिमेंट जो हैं ये राइट साइडेड एलिमेंट बन जाते. अगर आप यहाँ पे ओरिजिन मान लेते 2 के नीचे, ठीक है, तो सभी एलिमेंट्स जो है वो लेफ्ट साइडेड एलिमेंट हो जाते, तो आपका लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस बन जाती. तो ओरिजिन पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई की जाए? तो इसके लिए हमेशा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जब फाइनाइट डाटा सीक्वेंस हो, इनफाइनाइट के केस में तो कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है. इनफाइनाइट डाटा सीक्वेंस में कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको दे रखा होगा, तो देयर विल बी सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाइक x ऑफ n इज इक्वल टू से n स्क्वायर प्लस 1, राइट. n स्क्वायर प्लस 1 n इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके देख लो कि क्या वैल्यू आ रही है ओरिजिन पे. ठीक है. बट यहाँ पे जब फाइनाइट डाटा सीक्वेंस दे रखा है तो ओरिजिन पे क्या वैल्यू आएगी कैसे पता लगे? तो उसके लिए ज्यादातर फाइनाइट डाटा सीक्वेंसेस में एक पर्टिकुलर एलिमेंट के नीचे एरो मार्क कर रखा होगा. जैसे यहाँ पे एक एरो मार्क कर रखा हुआ है 4 के नीचे, राइट. तो ये हमें बताता है कि ओरिजिन पे ये डाटा सीक्वेंस का ओरिजिन है. That is, this is the x0 element of the data sequence. So all the element on the right hand side will be for positive values of the n, and all the elements on the left hand side will be for the negative values of n. For example, here we have position where arrow has been marked. This signal has a magnitude is equal to 4 or amplitude is equal to 4. Then next element, this element will be for x1 with amplitude 2. Next is x2 with amplitude is equal to 3. Next is x3 with an amplitude is equal to 2. And for rest of the values, that is x4, x5, x6, the magnitude or amplitude will be equal to 0. Similarly, at x is equal to -1, the amplitude of the signal will be equal to -1. At x is equal to -2, the amplitude will be equal to 3, right? And at x is equal to
3, the magnitude will be equal to +2, and at x is equal to minus, magnitude will be equal to 1, and for rest of the values, the magnitude or the amplitude will be equal to 0. So this is how we plot the given data sequence with the help of the mathematical expression which is given to you, right? And this arrow help us to identify the origin position of the data sequence. Yes, Rishabh. Oh, sorry, Rahul. Roll number 85. Yes, sir. अभी clear है? Yes, sir. So now we have plotted xn. Next is time shifting operation. जैसे हमने कल डिस्कस किया था, if you are adding something to the time domain parameter, then that is known as the advanced version. If you are subtracting something, then that is known as the delayed version. So let us obtain xn plus 2, right? Xn plus 2 will means the signal will be shifted towards the left hand side. With respect to this signal will be shifted towards the left hand side by 2 units. तो ये सिग्नल जो है 2 यूनिट से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा. जैसे 2 यूनिट से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो ये एरो जो है ओरिजिनल पोजीशन जो है वो 4 से हटके 3 के नीचे आ जाएगी. ठीक है, तो आपका जो डाटा सीक्वेंस है ये पूरे के पूरे एलिमेंट 2 यूनिट से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएंगे. सो ऑल द एलिमेंट्स will experience left hand side shift, right, by 2 units, right? So -4 pe the magnitude was equal to 1. Now this -4 will get located at -6, right? Similarly, -3 will get shifted at a location at n is equal to -5. Its amplitude will remain same, that is equal to 2, right? Similarly, x -2 will shifted towards the left hand side by 2 units, and its new position will be at n is equal to -4, right? So x, this is n is equal to -4, its magnitude is equal to 3, right? Similarly, x -1 will be shifted towards left hand side by 2 units, and its new location will become from -1 to -3, and at x is equal to -3, the new amplitude at this particular moment will be -1. So in this way, all the signals will be, or all the elements of the data sequence will experience a left hand side shift by 2 units, and in this way we can obtain xn plus 2, right? The initial sequence was starting at -4 and ending at +3, and the xn plus 2 sequence is starting at -6 and ending at +1, which shows that the signal has been shifted towards the left hand side by 2 units, and that's why it is known as the advanced version of the initial signal. Because why it is advanced? Because whatever is happening in this signal, that is xn plus 2, it is happening 2 units earlier as compared to the input signal, right? So जैसे यहाँ पे x -4 पे 1 magnitude आया था, यहाँ पे x -6 पे ही 1 magnitude आ गया. So this is 2 units earlier as compared to the xn signal. So that's why this new data sequence xn plus 2 is known as advanced version of the original signal, right? And similarly, x -2 will be shifted towards the right hand side by 2 units, right? Earlier it was starting from -4, now it will start from -2, right? And all the elements will be shifted towards the right hand side in this data sequence one by one, and in this way you get the new signal xn -2. The xn sequence was starting at -4, ending at it was ending at 3. The xn -2 is starting at -2 and ending at +5. So this is a delayed version of the initial signal, because whatever is happening in the signal has already happened in this signal, that is x of n, which is the initial signal. So that's why this is known as the delayed version of the original signal, right? That is the two different time shifting operation, advanced and delayed operations. That is the left hand side shift and the right hand side shift, right? So we are only operating over the independent variable, and the y-axis parameter or the amplitude is not experiencing any change in its value. So if you have any question, then you can ask. सर ये जो एक्शन वाला है उसमें सर आप 4 के नीचे जो लगाया है सर वो एरो, मतलब आप किसी के नीचे भी हम लोग लगा सकते हैं या नहीं, किसी के नीचे नहीं आप लगा सकते, वो तो गिवन है न्यूमेरिकल में, ठीक है, स्टेटमेंट में गिवन है, आप अपनी तरफ से नहीं लगा सकते.
अगर सपोज करो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम हो, एरर हो, ठीक है, स्टेटमेंट में एक बार मिस राइटिंग जो है वो स्टेटमेंट की राइटिंग जो है वो पूरी नहीं होती, पेपर में आपने देखा होगा कि बार जो है वो क्वेश्चन जो है वो रॉन्गली साइट हो जाता है, ठीक है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है और एरो मिस हो जाता है और फाइनाइट डाटा सीक्वेंस है, तो उस केस में आप अपने लेवल पे कोई भी एलिमेंट के नीचे ओरिजिन पोजीशन मार्क कर सकते हो। अगर आपको लग रहा हो कि ओरिजिन पोजीशन जो है वो एग्जामिनर मार्क करना भूल गया है और वो कोई प्रिंटिंग एरर है। यस ऋषभ, राहुल, यस सर, समझ गया सर। एनी अदर डाउट? सर ये xn+2 की जगह xn+4 या 5 हो सकता है? हाँ, कुछ भी हो सकता है, ये तो एग्जाम्पल है क्योंकि हम 2 यूनिट से डिले कर रहे हैं, तो सर उसमें 0 पे कुछ, ओरिजिन पे कुछ होना जरूरी नहीं है इसमें? मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। सर अगर xn+4 करेंगे तो 0 पे तो कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, 0 ही आएगी। xn+4, हाँ, वो आप 2 यूनिट से चला जाएगा आगे और आगे चला जाएगा और आपके पास जो है ओरिजिन पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, वो 0 हो जाएगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा उसका। हाँ ठीक। तो इसको हम बिट स्टफिंग भी बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि किसी सिग्नल का अगर एम्पलीट्यूड हमें पता ना हो तो हम उसकी जगह उसको 0 उसका एम्पलीट्यूड अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज नॉन एज बिट स्टफिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे सपोज करो, जैसे आपने बोला कि xn+4 होता या xn+5 होता, तो आपका सीक्वेंस जो है वो पहले ही हम 0 मान के चल रहे हैं। जैसे इनिशियल इनपुट सिग्नल जो था xn, वो x3 तक एग्जिस्ट कर रहा था, x3 तक, x4 पे हमें वैल्यू दे नहीं रखी हुई, x5 पे वैल्यू नहीं दे रखी हुई, x6 पे दे नहीं रखी हुई, ऐसे ही नेगेटिव पे -5 की वैल्यू नहीं दे रखी हुई, तो वो हमने अपनी तरफ से 0 ज्यूम कर रखी हुई है, क्योंकि इसको हम बिट स्टफिंग बोलते हैं कि कोई अगर सिग्नल का मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा हुआ तो बाय कीपिंग इट्स डिस्क्रीटनेस इंटैक्ट we can assume that the magnitude at that particular point of instant will be equal to 0. Okay. Yes, any other question? Yes, any other question? किसी ने और कुछ पूछना हो? So let us move to the second operation जो हमने कल भी किया था, बट सीटी सिग्नल के लिए किया था, टाइम रिवर्सल। सो काफी इजी है, आप समझ पा रहे होगे। x of n आपको that x of n is given to you and we have plotted the waveform, जैसे पिछले केस में भी हमने किया था। So this x of n is plotted here, that is x of n versus n, right? So this is the data sequence, that is x of n is equal to 1 2 3 -1 -4 2 3 2, and we have to do the time reversal operation. So time reversal means we have to replace this n with -n, right? So जैसे आप n को -n पे से replace करोगे, तो ये जो data sequence है, it will get flipped along the vertical axis, right? So there will be a mirror image of this original signal. So all the elements which are currently on the right hand side will move towards the left hand side, and all the elements which are currently on the left hand side will move towards the right hand side. So that is known as the flipping of the vertical axis, or creating a mirror image of the original signal. So that is how we obtain the time reversal operation, right? ये आपका जो सिग्नल है उसको हम फ्लिप कर देते हैं along the vertical axis to obtain the x minus n from x of n. So I hope it is clear to you. It is quite easy. That is time reversal operation. If you have any question, then you can ask regarding the time reversal operation. Yes, any doubt? Okay, so let us move to the third operation, that is the time scaling operation. This operation is slightly different from the time scaling operation that we did yesterday for CT signal.
in this signal, in this operation, that is the time scaling operation, again we are going to see compression and expansion. But this compression and expansion is slightly different from the CT signal, right? Because in case of CT signal, the x-axis was a continuous parameter. X-axis can take any value, that is small d can take any value. Whereas in this case, that is in case of discrete time signal, the x-axis parameter can take only integer values, that is small n can take only integer values. So let us start with certain examples, and after that it will be more clear to you, that is how we do the time scaling operation in discrete time domain. So let us again start with the same thing, that is x of n. This data sequence is given to you. This is the origin position. That is, this is the value of x n when n is equal to 0. This is x1, this is x2, this is x3. Similarly, this is x minus 1, this is x minus 2. This is the value of the signal or the magnitude of the signal at x minus 3. And this is the value or the magnitude of the signal at x minus 4. That is 1, 2, 3, minus 1, minus 4, 2, 3, 2 are the amplitudes of the x of n signal at these discrete instants. Now let us do x twice of n, right? X twice of n. So let us first of all substitute the value of n is equal to 0. So this will become x2, right? जैसे हमने n 0 लेते हैं तो ये बन जाएगा, sorry, x0 बन जाएगा. 2 multiplied by 0, that is x0. So the value of the new data sequence, that is x of twice of n at n is equal to 0 will be equal to 4, right? Now let us assume that n is equal to 1. So it will become x as a function of 2 into 1. That is, it will be x2, right? That is the, suppose if you write this signal, that is, इसको हम x of 2n को, suppose अगर हम एक नया signal दे देते हैं y of n, right? तो जैसे अगर आप y of n देते हो, तो so let us say that this is a new signal, that is y of n. इसको हम y of n assume कर लेते हैं, right? This signal is a new signal, that is, it is equal to y n. ये y n एक नया signal है, so y n is equal to x twice of n. So जैसे यहाँ पे आप n is equal to 1 substitute करोगे, this will be equal to y2 and this will be y1, right? Y1 will be equal to x2 into 1, that is x twice, that is y1 will be equal to x2. So y1 का value x2 के equal है और x2 की value क्या है? It is equal to 3, right? तो यहाँ पे हमारे पास y1 will be equal to x2, तो थर्ड एलिमेंट इसका वैल्यू 3 हो जाएगा. ऐसे ही y2 will be equal to x2 into 2, that is x4. What is the value of x4? x4 is equal to 0. So हमने यहाँ पे 0 substitute कर दिया. Now let us move towards the left hand side. So when when n is equal to minus 1, it will become y minus 1 equal to x2 into minus 1, that is x minus 2. So it means y minus 1 is same as that of x minus 2. So x minus 2 is equal to 3. तो हमने यहाँ पे जो ये वैल्यू जो है आपके पास ये 3, so यहाँ पे हमने 3 सब्स्टिट्यूट कर दी. Now let us substitute n is equal to 4 for yn sequence, n is equal to 2 for minus 2 for yn sequence. So this will be y minus 2 equal to x2 into minus 2, that is x minus 4. So x minus 4 having a magnitude is equal to plus 1. So we have substituted plus 1 here. So this will be the new data sequence, right? Or you can say that x twice of n will be equal to 1, 3, 4, 3, 0, right? So if you compare this sequence with xn, then we have picked only the even elements of the given data sequence, that is 0, 2, plus 4, 0, minus 2, minus 4. So we have picked only the only those elements which have even position. जो even value है, जहाँ even position है, वो pick की है to create x twice of n, right? And that is known as the compressed version of the original signal. The original signal has 8 elements, right? That is xn, whereas this signal has 1, 2, 3, 4, only 4 elements, right? जो non-zero elements हैं. So these are the 4 non-zero elements. So the original signal, if you compare x twice of n with original
data sequence, that is x of n. This is a compressed version of the original signal, right? So that is known as the compression in digital, in discrete time domain. So if you have any query, then you can ask. Any question? Yes. सर ये n equals to 0.4 कैसे आया +4? n equal to 0 पे x2 into 0 हो गया, ठीक है, x0 हो गया. So y0 will be equal to x0. x0 का वैल्यू 4 है. सर वो तो -4 है ना? -4 है. यस सर, मतलब xn लिखने में गलती होगी, वो -4 नहीं +4 ही है. हम आगे ये +4 ही है, ठीक है, वहां पे लिखने में मिस्टेक हो गया मेरे से, ठीक है, यहाँ पे +4 ही आना है, ये +4 ही रहेगा. ये यहाँ पे गलती से -4 लिखा गया, ये आपका +4 ही रहेगा, ठीक है. यस सर. तो इसलिए +4 है. और कोई क्वेश्चन? और किसी ने कुछ पूछना हो? ठीक है, आप नेक्स्ट करो xn/2. देखो स्लाइड में तो शो कर रखा हुआ है कैसे ऑब्टेन किया है. xn/2 इज द एक्सपेंशन ऑफ द डाटा सीक्वेंस, ठीक है, ओरिजिनल डाटा सीक्वेंस की एक्सपेंशन हो जाएगी. तो सॉल्व किया हुआ है, एक बार देखो उसको और समझो. उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन पूछो मेरे से, ठीक है. xn/2 देखो कैसे फाइंड आउट किया है. ऋषि शर्मा. ऋषि शर्मा, आपका रोल नंबर क्या है? सर 88. तो ऋषि शर्मा, आपको समझ में आया xn/2 कैसे फाइंड आउट किया है? यस सर. सो आप सबको पता लग गया xn/2 कैसे फाइंड आउट किया. अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो. Yes, any query regarding xn/2? रोहन सिंह. देखने को रहे हैं. देखो समझ में आ रहा है ना सब चीजें क्या लिखा हुआ है? यस सर. ठीक है. अच्छा, फिर इसको चलाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, नीचे क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि जब भी घूमेगा तो उसके साथ सोलर पैनल भी घूमेगा ना. बाहर बैठो, उधर उधर. हाँ, ये. आप लेट के आ जाओ. अभी नहीं, दरवाजे आवाज आएगी डोर की, ठीक है, थोड़ा वेट कर लो.
So, okay, thank you very much. Today we also period that is 2 to 2:45. The tutorial link is will remain same for all the groups. तो वहीं जो Google Classroom पे जो tutorial के लिए लिंक दे रखा है उस पे आप क्लिक करके जो है Google Meet के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो for the tutorial class. जिस ग्रुप की भी आज tutorial class है. So, okay, thank you very much. Thank you.